Good afternoon, one and all present over here. For our session 3, we have Dr. Devendra Singh Dhapola, Senior Consultant UNICEF. He'll guide us about the WaterSmartSolution and strategies by UNICEF. He is a senior drinking water consultant for UNICEF to support Jal Jeevan mission, and he has demonstrated 34 plus years of experience in water resource program management of large investment in project formulation and designing, bilateral loan negotiations, DPR appraisals, design reviews, budget management, and disbursements. Um, During the last 34 plus years, he has also developed the capacity and practiced skills such as smart and quick decision making, negotiation and persuasion, ability to work under pressure, conflict resolution, change management, seeking commercial awareness, networking and client interaction, working in a diverse team, effective communication. The organization of the work developed confidence, perseverance, and motivational skills. This has helped him to perform smarter way on the assigned task in a time-bound manner and successfully focus the way learned water and sanitation sector technologies, prepared water sanitation sector documents, manuals, advisories, city development plans, review PPP projects, led and contributed to new insights, solved complex problems as well. He is practicing trainer in participatory program planning and management related to urban and rural water and sanitation infrastructure developed, as well as soft skills for human resource development associated with 7 years with Administrative Training Institute, UK. I thank you, He has Ashita. Yeah. Okay, It's ma'am. okay. So we are glad to have you here, sir, to enlighten us, and we heartily welcome you. And now you may take over the platform. Thank you. Okay. Okay. Thank you, Nikita. As I was introduced, it's like this, and I also welcome all the participants in the this program. And I also thanks to Madam Alka. She has given me this opportunity to talk to you and to transfer my knowledge, my whatever the knowledge I have from last 34 years. I will try to transfer you this to you. And I also request, if you have any issues, any problem in future also, you can call me, you can talk to me through Madam Alka, and I will try to help this. My basic motive of doing this is to develop the leaders in the water supply system. I mostly work on this. So you people are the future leaders for the this water supply system, drinking water system in India and abroad also. Just as per schedule, I will just go through with the what the UNICEF do in the UNICEF do what they, in what area they do, and what they do in the water sector area. Then what I am doing, I am supporting UNICEF. I am supporting Jal Jeevan Mission through UNICEF, and then I will discuss with smart water management system. And in this also we'll also have, I have also sent the link of e-Jal Shakti portal of Jal Jeevan Mission, where you can connect and you can see the how remotely, very remotely, we are sitting in the Delhi, we are sitting in the any place of world, we can see that in that village how much water has been delivered today, and how much chlorine is this, how to tedious is. So this is the IoT system we are developing with the Jal Jeevan Mission. Can all are hearing, madam? Can you hear me? Yes, Hello. sir. हाँ, it's okay, thank you. हाँ, बीच बीच में आप जरा बोलते रहना से तो मुझे लगेगा. Actually I am sitting in I'm in visit with the in lay official visit, and we are just there in front of my, there's a big hall, there's a lot of lay council is sitting there, and there the villagers are discussing the Jal Jeevan Mission, how they are going for the Jal Jeevan Mission. I'm just In fact, sitting around. Hello. in fact, Dr. Devendra,
Yeah. Long time back, a long time back, almost like 2010 around, we Hmm. have done a lake festival, and Oh, there, a lake that after the airport, there's a place, and first time it was opened up uh, to do the festival, and Lake yeah, Council yeah. was partner there. Yeah, So great, great. The Lake Council chairman was there in the morning. He inaugurated the program. Am I in city? yeah, I'm just sitting. You have seen background is the barren hills. I am sitting on the one hill area because so you can I can't go. actually Huh? once I in a can't while, go. please switch on your camera so that we can see the beautiful. Okay, okay, okay. Just I will try Why to do you show do you. that? You can see. You can see. Can you see? But This yeah, is. we can see. Yeah, yeah, we can see this now. This is the barren hills. Is the basically and the other dogs here, local dogs. This big hall around 500 people can sit in this hall, and the things are going. This is the lunch arrangement they are doing. We will have Hmm. they will serving the lunch after some time, and these are all the Okay. barren hills. Yeah. So you can see the snow there, and you can see the snow there also. So it's a pleasure to discussing with you all from the so important discussion. And just UNICEF is the basically works in all over world, all of the world, lot of cities, countries they work. And in Okay. India, pardon, it's okay. Yeah, yeah. Sorry, sir. I'm just Ah, saying ah, presentation. I was asking my colleague. okay, okay. And but UNICEF works in the all over world. They have lot of subjects where they work. Is the water is the one of the subject. So in the they have UNICEF works to promote and protect the rights of children. Basically, whatever the work they do, that behind that the development of the children is the main objective, whether from doing the education, whether from doing the water supply, whether doing from the sanitation system, whether doing from the any other subject they work, they all focus with the children's. And basically they believe on the rights of the children. The children are the future of the country, and they should be given all facility, good water, good education, so they develop as a leader in the and lead the in future works. And they work in the 190 countries. And these fellows who are in the this boot camp, I think they may be the future UNICEF officers, and they may certainly joining the some few people are joining the UNICEF as a consultant, as a officers also. They must know how the UNICEF works. And you see UNICEF getting the funds from on donation from the different countries, different governments, and they then they have the some objective, and then they have the some area of action, year wise area of action. Then that fund was utilized on these issues. Especially they also focus children's means girls and boys both, and disadvantaged group and all they cover. They work in the health sector. They improve the health and newborn baby health, child adolescent health through collaboration with the countries, government, and partners. In India, they are called as the UNICEF India office, and they also work in the in India in the health sector. Basic aim is ending preventable material and newborn and child deaths, just to protect by giving the good water and providing them the vaccination, polio vaccination, such all of the things. You can see all these details from our website. Basically, child protection. They work in the child protection area for the child rights, and they create in the good. They try to help them to they develop in the good family background, good family environment, protected from violence, abuse, and all this. So this is also one of the aim of the UNICEF.
UNICEF also works in the education sector to develop provide the equitable quality education to the all boys and girls, and they try to all the boys and girls goes to the school. They helped us on this. They have a lot of through NGOs and through collaboration with the state government. In India, there is a 14 uh, uh, 14 state has a UNICEF office. Though from there they discuss with the state government, and they merge themselves with the state government policy and try to help them in their policy and to focus on their aims also. Nutrition, all the child and girl child, boy child, they get the good nutrition. Their mothers get the good nutrition. So the child, they are also good in the health, and they can do the better performance they can do in the future. This is one of the area of UNICEF. Can you hear na? Hello, hello. Yes, sir, we Yes, can we hear can. you. अच्छा अच्छा हाँ हाँ Yes, बीच बीच sir. में यस यस बोलता रहा करो यार There's अच्छा another ठीक है thing, हाँ Dr. Devendra, if you can tell us when to change the slide so that we can figure out we are हाँ aligned with your. I think as I am reached in the water, you can change the slide. I am Water. discussing the water. No, nutrition is okay, and Uh, I'm talking heading. Then you can change the slide. And then we are there is a water sanitation now, and where I support UNICEF and Jal Jeevan Mission is the biggest program of the history, where we are planning to give Har Ghar Jal. Each villager must have the tap connection inside their household. So this program, if you see, this is around 3.6 lakh crore. It's a big amount, and around out of this 2.50 lakh crore given to be given by the government of India as a grant to the all the state and UTs, and remaining fund just to fill up the complete the 3.6 lakh crore, the state government and UT have to supplement the money, and even 5% fund also supplemented by the community. The person who is getting the connection, he will also help on this. So in the water sanitation sector, UNICEF is working from the long, and all the 14 department of UNICEF offices of the UNICEF in the state, they do the day-to-day working with the state governments, and they help them state government in the different type of the technology and different type of solving the issues. Whatever the state government asks the UNICEF people in the state, they help them. So you can say ki they are like a Hanuman ji for the state government. They solve all the most of the problems, and there the people like me and people like you are there who are I can say these people are very motivated people, and all the 24/7 hour we work with the along with the state government, and we try to resolve this issue here basically. uh, the we also provide the training at the plumber level. We develop the training modules for the plumbers, masons, and how the new technology is coming. We also train the public health department engineers in the new technology. What are the new technologies are coming all over world, and whatever India, the new technology coming. Also, we also support them the indigenous technologies. When indigenous is suppose in lay, there is a issue of the when they lay the pipe, and during the winter pipe that water freeze in the inside the pipe, and they don't get the water below 0 degree, there all everything is freeze. So we came here and we discussed with the villagers in this this is a total participatory approach. We sit them with them and discuss with them, and during the discussion it villagers has evolved a solution also. When we discuss, they have evolved a solution. If they were given the solution, if we dig a trench of below 4 feet, we put the pipe below 4 feet below the ground, that will not frost.
So this is the solution. So this is these are the traditional methods of doing the work. And in India and even all over in the world, there is a lot of traditional system has been developed, but due to the time, different time, we forget all these. New technology came, we forget the traditional system. So there's the issue. So we came here and we discussed with the people, and people has suggested this is the technology which we are using from the long time. It's not a government is giving this JJM from the last 1 year, and it's not, and they people are living here from the thousands of years. It's not possible that they are not drinking the water. They are drinking the water with their traditional technology. So we evolved with, and the solution came. Today we are discussing with them here in workshop. This is the traditional insulation thing you can do. And even these their water tanks reservoirs are also above the ground. They would put three-fourths of the reservoir in the below the ground, and one third is above the ground, and they cover it with the mud layer of at least 1 meter thick layer of mud. They cover it so water doesn't get froze during the winter time. And today we have also discussed during the meeting that if these villagers also has developed constructing in their field that क्या कहते हैं उसको seed basically is a plastic seed. They wrap the plastic seed in the frame, and inside that they develop the nursery and some uh, vegetable. So we are, they are also suggesting if they construct that seat, that structure over the water tank, so the temperature will be high inside. Hello, listening now? Yes, 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 sir. 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 Ha Yes, ha. sir. So that temperature will be high, and water didn't get the froze, and that not much cost very high. So these are the indigenous technology what we do in the water supply, and we help them to do this. And the next one is the next slide, social policy and inclusion. This is one of the objective of this UNICEF, where all the people work, enabling policy environment. The government, we also support government to develop the policy linked with the children's, boys and girls. So we impress upon this. On SDG goals, we also cover all the SDG goals somewhere. SDG goals, probably you are listen about earlier, na? SDG goals. Hello. Yes, sir. We Ha. know. So we, and we also impress upon the different governments to develop such policy where UNICEF objectives are fulfilled. And as a world level, government of India is compiled. They do they have to follow the SDG goals also. So it's important for them. Otherwise, they will be asked why not they are doing following these SSC goals. So we help the government of India also on this. And adolescent development and participation, जितने boys and girls के programs को empower करने के लिए we also UNICEF also work on this. थोड़ा सा यहाँ से आवाज क्रैक हो रही है. And the next one is the gender equality. And for the boys, and both boys and girls get the benefits on the same line. There is a no big support to the boy and no bad support to the boy. So is the equality issue is there. So this is one of the objective of the. And then next one is the early childhood. This is also one of the objective where the small boys and girls, we provide the education to them. We every child get the good food, good education, good place for the living. Their mother should be healthy. These are all other also objective to help the community. And what is the disaster risk reduction? So in this case, we also have such as I was involved sometime when I was with the International Federation of Red Cross.
that where there is Nagapatnam. You have heard about the Nagapatnam tsunami. When the Nagapatnam tsunami just came, immediately our Indian Red Cross has done the reaction, and we went there. We immediately assessed the. We have the team and different type of the people there. Who some people are assessing the water supply. Some people are sanitation. Some people are living, and their whatever the disaster has done. So we find that there is a no drinking water. So we immediately by helicopter we dropped one RO system there and started giving the drinking water to them. So the such type of the disaster risk reduction we also do, and support preparedness and further future preparedness. So UNICEF also do this, and we have the team of the people, and they visit, and we with the government, state government, we plan this, and during the emergency we have just like this COVID time. UNICEF has given lot of medicines, and where people are लोग झिझक रहे थे लोगों से मिलने के लिए, तो यूनिसेफ वहां पर आगे आके कोविड इफेक्टेड लोगों को रेस्क्यू कर रहा था. तो ये भी ऐसा, तो ये भी जज्बा इस तरह का होना चाहिए. जो आपके बूट कैंप पर जो लोग आए, यू आर द फ्यूचर part of the UNICEF, these UN organizations. So this type of the work we also do. And then one is planning, monitoring, and evaluation. We also help the government and in planning whatever they like in all these subjects. We plan a nutrition plan, what supply. These also we help and monitor to our teams visits the village. Just like me, as a UNICEF person, I will tomorrow I am here, and today I am here. Tomorrow we are going to Kargil, and then we are going to the Srinagar or by road. So in between Kargil and Srinagar, we are visiting at least 10 villages. The team is here, and we are visiting at least 10 villages and checking where the JJM work is going correctly or not. What's the progress? We have a portal, and you can also see the that portal, that is public portal. We don't hide in JJM. Government of India doesn't hide anything, any information. You can see all the information in portal. E-Jal Shakti and Jal Jeevan Mission dashboard. If you go on the Jal Jeevan Mission dashboard, you will find all the information there. Even you can go up to the village level also. You can, and even you can see the name of the person who got the water supply and who didn't got the water supply. So this type of the info planning and information we help uh, government also. Communication to the development, and it's very important thing how you communicate with the others is very, this is the techniques, basically the other techniques. Communication, everybody has some communication techniques, some communication. Some people are communicate good, and some people are communicate little less, but everybody communicates. The your communication should be such that the other persons in front of you can understand what you are telling. Immediately he understands the things. For that we use in the rural area, basically. In the city area, actually people know language, Hindi, English, and other language. Everybody know. But in the rural area, in Leh, suppose I go in the some Nagam village here nearby. So they have the local dialect, which we don't understand. And our dialect, if I am speaking Hindi and any English, so they don't understand. So how we communicate with the community that they understand the Jal Jeevan Mission is very important, because this project is for the people. So we use the PRA technique. You have heard, probably some people have heard about the PRA techniques, participatory rural appraisal technique, rapid appraisal technique. These are the techniques which tools we use during in the field. In Jal Jeevan Mission, there is a called ISA. ISA are basically the NGOs of the local NGOs. We hire them and we train them, and then they go in the village with the engineers, and they use these techniques. They have information giving and information taking. These
techniques includes both. Through that, we communicate with the people who don't understand our dialogue, who don't understand our language actually. So through PRA and SARAR. SARAR is one of the techniques. If you search in Google, you will get the SARAR. And during my work with the Uttarakhand Academy of Administration, we have developed that SARAR is the basically English version developed by the World Bank people, and Asardar is the Hindi version. सरार का जस्ट हम लोगों ने रेप्लिकेट किया था असरदार. That is also tools used for the communication with the people. So these are the broad topics which where the UNICEF works for the all over in world or in India. And ma'am, is at this stage, do you feel we should take some any question? Hello. 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 Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. Anybody has any question, so we can answer. I can answer. Hello. It's okay. Yes. Yeah. I think anybody has any question here till this point about UNICEF and especially the Jal Jeevan mission, which is now he started talking about. Jaldi. I will start now on Jal Jeevan Mission. Yeah, sure. So till now, UNICEF, Dr. Devendra, I was also involved with couple of UNICEF projects, in fact. Yeah. So one of it was where at that time WASH team of UNICEF was trying to work on group hand washing. That was the concept that Mamita was there. Yeah. She was, Great. and there was another school WASH program. And what I've seen is how UNICEF is working is they create this demonstration, in certain districts, and then they then ask the government to scale it up from there. Yeah, exactly like this also. Yeah, sure. UNICEF works like this. Yeah. And it's nothing, not a rocket science to understand the UNICEF. If you go there in website and you can see everything. But whichever I'm telling, they are very short, and probably in the team, the people are somebody is interested in water supply sanitary, somebody interested in nutrition, somebody is interested in disaster risk management reduction. So they can go on these UNICEF and this their अपनी पसंद का उसको click करके you will get the detail about this. Okay, and if you just I have given one e-Jal Shakti government gov.in one link here, and that link will take you the smart water management where we have had a lot of pilot projects. And for understanding the Jal Jeevan mission, now I will discuss with you UNICEF work in the state in very brief. UNICEF work with the state, 14 states, and they have the WASH teams. WASH is the basic water, sanitation, and hygiene. As the madam told, just telling the hand washing is comes under the WASH. So they are called WASH experts, and they work in the with the state government. They help the state government in developing the draft policy documents. They help them the draft training documents for the engineers, for the policymakers, and they also help them on day-to-day basis somewhere in monitoring. And when the state governments give them their portal data, then they analyze the each and every data and what is going, what to be done. They analyze it and give us the back to the government, develop the document, and where the government the officers get the where they have to focus and how they have to focus. These are the all details they provide in their documents. And then in state government, UNICEF WAS team also helps state government to monitor and evaluation the projects, what are the projects going, and they also help them the technology evaluation
they also help them in the area, and sometimes they also help him the visiting the village, and these PRA techniques or these all techniques, how the actually sometimes engineers are rigid against, they think ki we are we this is the technology we can do, nobody no other can do this, but the in the UNICEF we try to break this ice with the engineers, PhD engineers, Jal Nigam, Jal Sansthan engineers, that this water providing the water supply can be also managed by the community for some level, just like the planning of the distribution system. Then local people can easily help the engineers where the land is available for laying the water supply pipes, and where they can get the free land for the reservoir. So these are the helps what the community can do. So such program also the UNICEF WAS team help the state government. Then I will now discuss with you the Jal Jeevan Mission. Okay. Hello. Yes, sir. Okay, sir. It's fine with Nana. And e-Jal Shakti government, there are two websites. One is if you search in your Google Jal Jeevan Mission, so you will get our main website where you can get the dashboard. Some people are with the in the computer, they can search Jal Jeevan Mission dashboard. So you will get the what the today's uh, connection has been given. How much connection given today? You just on it and just note that data, how many connection has been given, and after completion of my this talk, you just check. So you will see the numbers has been improved. So you can say कि Jal Jeevan Mission in before COVID, we are giving 1 lakh connection per day. You surprised? Not? Hello, hello. Hello. Yes, Yes, sir. sir. आ रही ना आवाज आ रही ना तो just before COVID we are able to give 1 lakh connection per day in all over India. So this is the pace of the Jal Jeevan Mission providing the connections. So you can see that dashboard and you can get all the data. Jal Jeevan Mission doesn't hide any data. All the data available here. Now I will just give you the small brief of how the Jal Jeevan Mission evolved. Actually, uh, earlier there is a lot of projects has been developed by Government of India. Earlier, it was in 70s, the accelerated water rural water supply fund is given by the government of India. With the time, there are different projects. In 1996, uh, World Bank is mostly the funder of these projects. Sometime before, the government of India get funds from the World Bank for the water supply system and all these. So World Bank discussed with the government of India that why not we start a one pilot project on uh, participatory rural water supply. So this then the UP government has taken this, and two area has been identified. One is the Bundelkhand area, and one is the Uttarakhand area. In that project I was involved as a founder member of that, and that at that time the purpose is providing water and involving the community is the main objective. Basically you can say this that project was the community participatory water supply system, you can say. That pilot was run by the UP government around 6 years, and 1,000 villages in Uttarakhand and Bundelkhand has been provided with the water. But that water is not at inside the village, inside the house, but that water is up to the group of the house. That is called stand post. So 10 family can take from the water from the one stand post. And at that time, uh,
we are able to provide this, and the whole community has to involve in the this whole project process. We as a government people, we tell us facilitator. Okay, and we under the Panchayati Raj Act, the villages evolve a village water sanitation committee in the village. That is the subcommittee of the Panchayati Raj, and there's a chairman and vice chairman, then members, and we promote the women's take the chairperson's position, and we are always happy that if whole VWC is the led by the women. Can anybody tell me why this is? But Why the we like the woman lead the village water sanitation committee? yeah, Any come on, everybody. any lead? Sir, because mainly in the village area, women are the one who are responsible to fetch water from well and nearby sources. Great, So they great. better. हाँ, ये तो बिल्कुल correct right answer you have given. So actually in villages as well in urban areas, in forget the areas, in the family, in our घर हमारे घरों में जो हमारी our mothers and our sisters, they are basically more linked with the water. They are using that water. And in villages, women are fetching water from the kilometers, 10 kilometer, Rajasthan area, 10 kilometer, 15 kilometer. They घड़ों में पानी भर के सर पे लेके आते हैं. तो this totally and because of that, the उस family की जो बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी गर्ल्स है, उनको भी that mother takes them to the water source and they also bring some water. तो उनका जो पढ़ाई का टाइम होता है वो खत्म हो जाता है. वो He'll be traveling on road and he won't have network. So then we swapped the session with Tata Trust. Tata Trust session was supposed to be today. Then we requested them and then we shifted. So this all happened yesterday, in fact. So, and what we also do as part of scheduling the session, as leaders, you should also, some of you will be involved, not on the spot itself, but before. So each and every speaker or organization that we are reaching out, we obviously after sending the communication, we do in one discussion with them on how we want the session to be happening. So those meeting with experts has happened, like with Dr. Devendra. Just now we had with plan Tata Trust meeting also happened. Two meetings happened with Tata Trust in fact. So this is how then we streamline, we receive presentation, see presentation. So this is how the sessions, kind of get planned. Yes, so that's the reason is very, very important for all of us to kind of immerse in it and see what the others are presenting. And that's what plan team and we were actually sharing that we had no such opportunity. Here, we're trying to get the top-notch organization in the country to talk to you, to interact with you firsthand. And they are all, and the experts also more than willing to say that you can engage with them later also. So this is how we are building the profile. Okay, so where are we? Let's see. We'll wait for his session. Let's see if he's. I'll call him up and figure this out. One second. So call is going. I think, yeah, he will join anyway. So in the meanwhile, we tried this breakout session, which were not quite a success before lunch. It didn't happen the way we wanted. And I was sharing later in Nivea's group that what is the kind of exercise that we're trying to do through this preliminary brainstorming. And I'm happy to take question because I can see a lot of, kind of confusion, I won't say, but, the consensus or experiences or knowledge is yet to be built on what we're trying to put together through that assignment. And we are happy to do that in smaller groups. If you would like to come later and say,
we didn't understand this, please explain to us. We will explain to us, you guys, in smaller groups, wherever you are comfortable. You can say, okay, 4 of us are interested, then we can do that also. And Nivya and Badal I'll request them to kind of organize those smaller meetings also later. So I was sharing a proposal idea with Nivya, and let me share that with all of you in the meanwhile. So what I'm saying is, what we are saying in this one, for example, under Namami Gange, everything has to be around the basin only. So 4 ideas presented, 5 ideas presented by Badal and Nivya. One more, like, you can make a combination of it: technology, action research, policy, capacity building. It can be a combination, but it has to have some youth focus. That's our main primary beneficiary. So I was just saying, just a very broad idea, not exactly you need to develop that online. You can develop on this line also, you can think of something else also. But if we can look at along the Ganga River, in the cities, but there in the Ganga River, 50 cities, 100 cities. Those cities, we look at the education institutions, government, private, all, and we do tie-ups with them and make them water efficient, water smart campuses with all, and create those role models across, and also do capacity building of faculty, educate administration and these students there. So just imagine a scale of it, that you are 20 of you, and here if each college campus has 500 to 1,000 students, or 500 of, and I'm saying regular institutions also, graduation level and all that. Look at the huge impact in 2 years down the line, it can be there. So we can create systems along with technical institutions. We can involve technical institutions here to develop that, plan for how to make the campus more water efficient. And then we implement those out. There'll be a one group only working on the capacity building part of it. There'll be one group who will be, doing the awareness part of it. And then in the phase 1, if the campus is green, efficient, all system developed. In phase 2 of the project, the communities around the campus can be engaged along with the campus, team. And look at, if he's talking about 100 cities or 50 cities, looking at each city, we are talking about some 10 to 15 colleges or institutions. So you yourself can see what is the kind of impact, and we say both. It can be combination. University campuses, there's a huge campuses they have, and the water audits can happen, water quality testing can happen, and we can develop some models. So you are all, some of your technical background people, so you can look into, get a part of the technical team. Some of them could be in the capacity building team. So we can just figure this out, and some can be, action research can be there. So some hypotheses we can test, some research papers can be brought out along with, yeah, and then obviously communication, water literacy is another. Yeah, all that I'm saying. And then when these models are developed, then we can, show it to government, that particular state government. And we can tie up with state governments also, because then their resources, like Navi and Neva was saying, municipalities. Yes, municipalities can be pitched in, and with that kind of thing. So I'm talking about something like that. When a proposal is built, you need to give a larger picture, but you need to measure your outcomes. So measure your outcome means how much groundwater we can recharge, how much water we will save, how much plantation we will save that will help us to conserve more, how we will be saving A category of water for the B and C, and vice versa. So all those kind of things is what I'm talking about. So that's the reason it's important that you go through a Namami Gange website, look at the presentation that is sent to you, and let's have discussions in smaller groups and all that. And then we will, kind of assign roles. And we develop a wonderful proposal, go as a team to them and say, look, this is what we want to execute. This is what we want to implement. So think of a scale. If it is, you're saying, no, we want to work in the communities, in the panchayat, across the villages, in the basin. Perfectly fine.
or you want to say that we want to work towards artificial wetlands across the basin. Perfectly fine. Then let's just build something around that. And so point is we need to see what exactly we want to do, how we want to do all that. But, or maybe we want to only work towards making sewage treatment plants more efficient, FTPs more efficient, or like that. Or maybe we work with PhD with the government, but we need to see we are youth group, how much, and we need to have something where we don't need a lot of technical support. We also need to see that. Though we can get your technical institutions, your academic institutions also involved in it if we need to involve in it. Let's see. I'm saying think from that point of view so that we have certain idea, and then we go to Mr. Mathuria and say, this is what we have in mind. Do you think will work, or you want us to look at another focus? And then we develop further and finalize and submit. It'll be fantastic. I must tell you, if something like this works out, it'll be a really, really good opportunity for each and everybody who is part of the cohort. And the 18 of them earlier, and now you are there. And depends on, don't worry about your commitment in future. Whatever you're doing, you do. And whatever you can commit, you can commit. But let's just develop a proposal, a live proposal. It'll be a very fantastic exercise. By end of the fellowship, you will know, okay, this is what we have done. This is what we created. They can understand their mind. Yeah. Yes. So we need to look at from that point of view, because we like to bring in youth perspective and youth, kind of angle to the entire Namami Gange initiative. You never know how ministry will take it. Might be they like it and they, promote it themselves at all level. So that kind of thing I'm talking about. And that's the reason I'm very excited that, generally what happens is organization go and pitch the project, but never ever, a cohort like this is asked to develop and will take you to pitch it. It's not like that we are going to go and pitch it ourselves. So collectively we build it together. We will create a Google Drive and a Google Doc. And once the proposal structure is clear, then we will keep on kind of put that format together, assign group wise, you work, you dump it, and then we will keep on revising. We'll create a group and we'll create a Google Doc. Here, because we are just trying to, utilize this time. So after his session, we'll try to break out in group again the way we have decided, one Badal and one Nivya, and have discussion. Right now, these are very preliminary discussion. No problem at all in terms of the idea is good or bad, doesn't matter at all right now. Just put your thoughts there. And from that, we will, kind of on the table, we'll put entire thing and we'll pick up our meal properly, that what is that we want to have it when we package it together. So the roadmap is, we do preliminary discussion today. And because tomorrow, there is no time, the sessions are so packed to pack that we will not get any time till 6. So today, and then in the meanwhile, we will just jot down, create a Google Doc just to get your thought process together. And if one round more discussion is required, we do one more round of discussion. And then we create smaller teams and we will put it together. If we all put our energy, it's not more than a couple of hours job or, couple of days job. With all the graphs, with all Gantt charts, we can create a nice document altogether. So what do you think this idea, that this makes sense to you? The way I'm excited, is this sound exciting to you also as a cohort? Feel free to talk. It's okay. It's can be good. It cannot be bad. It can be bad. Because anyway, you will have discussion. Ankit, bolo. Yeah, ma'am. It will be very exciting रहेगा अगर ये हो जाए तो. If this happen that, क्योंकि मैम ये एक I think एक ये न्यू एक अलग चीज है अपना हम लोग के लिए, बिकॉज अभी तक ऐसा हमने नहीं किया कि कोई हम प्रपोजल किसी को दे रहे हैं. अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है और हमको बहुत सी चीजें सीखने को भी मिलेंगे, बिकॉज इन दिस अभी आप लीडरशिप क्वालिटी की जो बात हो रही थी मैम सुबह, इन दिस इफ
we मतलब we got and तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे से इनका इसमें बहुत से काम भी होंगे जो मतलब जो हमारे लिए बहुत नए होंगे और बहुत सी एक्सपीरियंस भी होगा. Yes, ma'am. It's a like we have to collaborate all the ideas of all the Cohort fellows and form a single proposal. It would be nice to like think in all directions, contributing to that idea. So it would be a nice exercise. It should be interesting because one is that you all will practice writing. You will all practice collaborating and teamwork all together. And some of you will be leading. So we need to, I'm just trying to see what kind of leadership qualities we'll practice. Yeah, that is when we finish proposal part and funding part and pitching. Pitching with the front of, secretary and all other is a task in itself. Yeah, so, okay. I'm sure there'll be some of you which are at different stage of thinking. And I think this is what we call it, kind of cohesion, and this is what is inclusivity. I'm perfectly fine. You are at a very nascent stage of thought or a second level or third level, perfectly fine. But it'll be very, very nice. I can really visualize it. Very interesting thing that will happen. So how do we do it now? We'll try again. Otherwise, we will put that in a group. Again, we'll try to break out into groups to work on this. So Badal and Nivya, you have clarity on what we are talking about now. Yes, ma'am. So once we so what we'll do is the breakout sessions are not clear. Then you can, do WhatsApp call and discuss it also among yourself, because if they break up because of the kind of issue that happened, I don't want that to happen and waste time like that. Yes, ma'am. Ma'am, also, I think all of us, including me and Badal, we've done very basic research. And to actually discuss ideas, we need to do a little more studies about it, ma'am. So maybe if we get some time, it would be. Yeah. I'm saying discuss it out today, then research, then further discussion. Before we start jotting down on paper, clarity has to be there in mind. Once you are clear in your mind what you want, it will come down on paper easily. So Mr. Devendra is saying I'm trying to join. So let's see. Actually, Jal Jeevan Mission, as I was telling earlier, the Jal Jeevan Mission is uh, brought to discuss focus with the community. Water supply system developed by the community itself. So we are the Jal Jeevan Mission is a facilitator at the central level as well as at the state level also. And we under the uh, 73 you have heard about the two amendments were done during 1990. One is the 74 amendment for the decentralized decision making at urban area like municipalities basic, and another one is यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन का भी कमी रहता है तो थोड़ा हाफ जा रहा हूँ. So another one is the 73rd amendment that was for the decentralized decision making power given to the gram panchayats, basically the villagers. So under this, the Jal Jeevan, under the 73 Amendment Act, the around 73 Amendment Jal Jeevan Mission is made. The policy is like this. So the villages, village water sanitation committee is formed under the gram panchayat, and we try to make the woman as a empowering at the village level, and at least 50% of the women must be in that committee. And if there a chair is with the woman, is the more we feel is a more better thing. Then because as earlier we told ki women are the mainly working on the water issues and issues they are facing, so women needs to be leaded on this.
Another issue is also that mostly women manage the household things. पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से चलाने का काम महिलाएं करती है, ठीक है, तो वो बड़े सक्सेसफुली चलाती है, बहुत सक्सेसफुली चलाती। तो ये भी एक पॉइंट इसके पीछे था कि वुमेन शुड लीड इन द विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी. So we are trying this, and lot of women-led committee has been formed in India. There are around 6 lakh villages, more than 6 lakh villages in India, and there are a lot of village water sanitation committee uh, have women participation on this. So what are other how they do? The total we have just I will tell you the total structure of the Jal Jeevan Mission at national level under Ministry of Jal Shakti. There is a two departments. One is the Ministry of Water Resource and River Development, Ganga River Development, Rejuvenation. One is the Department of Drinking Water. So I am supporting through Unicef the Department of Drinking Water, who holds the Jal Jeevan Mission program. And Department of Drinking Water and Sanitation, there are two wings. One is the sanitary wings, sanitation, where you have heard about the total sanitation and toilet construction and all. And another one is the uh, this water division. So I work with the water division. Water division is headed by the additional secretary level officer. He is Mr. Bharat Lal, and under this there are around 7 directors and their staff, and there are the consultants from like me, from UNICEF, from Tata Trust, from WaSI are the consultant as a grant के तौर पे ये consultant दिए गए. Then there is a two PMUs. One is the EY PMU, one is the KPMG PMU. There are around 44 people are working. Total team you can see is around 110 is the team at national level. It's called National Jal Jeevan Mission. Then at state level there is SWSM, State Water Sanitation Committee. That committee is mostly headed by the Principal Secretary Water Supply, PhD all, and under the Water Resource Ministry they work. And there is also team, and there is a team implementation agency. The mostly the implementation agency for the water supply is the PhD. In case of Uttar Pradesh, they are Jal Nigam, and in case of other state, mostly they called PhD. PhD is a Public Health Engineering Department. Then at district level, there is a DWSM, District Water Sanitation Mission, and headed by the district magistrate. And again, there is a team of the engineers from the PhD department. Then come to the village level. There is a village level. A Gram Panchayat is the owner of this Jal Jeevan Mission, and under this, the subcommittees constitutes a Village Water Sanitation Committee, or somewhere Pani Samiti. These Samiti headed by the one chairman, and there is 11 around 10 to 11 members, 50% women. They holds the whole responsibility of the implementation of the Jal Jeevan Mission. The Jal Jeevan Mission at the village level supported by the PhD engineers, and basically the PhD engineer other than VWC, we say other people are the facilitator. And there's BWC also supported by the ISA NGO. People from the NGOs had hired. Probably in India, lakhs of NGO has been hired for this. They discuss with the community. They what happens? Sometime one booted person goes to the village. Then village people are thinks he is the sahab hai. इससे कैसे बात करें? This is the issue. Then ISA comes here. ISA roles comes here to minimize this trauma. I say the people are there, the young boys like you and me. I am also young, and the girls, they are mostly background of social science, MSW, and sometimes other people, engineers also. So they sit with the villagers, they discuss with उनकी छोटी छोटी परेशानी को पूछते हैं. Village में ये भी होता है कि the male outsider male can't talk to the village woman.
So there is a role of the woman member of the team. She is talking to these women and motivating them for participation in Jal Jeevan Mission. So ultimately, the BWC prepares the village action plan for their village, and that village action plan is discussed in the Gram Panchayat meeting. And they must be the 80% of the people of the village must be the part of the Gram Panchayat meeting. So that sorry, village action plan is approved. Village action plan consists of all the issues and solution of the water related in the village, and finally the engineers that village action plan discuss with the engineers also. Then they prepares the detailed project report, and they give the three options to the villagers: techno feasible, techno financially feasible options. It always good if in the village where the villagers has to contribute and they have to manage these scheme, and for the long term sustainability, the DPR, the project is of the less cost, and very simple technology is proposed is there. If the simple technology used for that project is always good. Most simplest technology is the gravity system. The water source is above the village, and from there we lay the water supply lines, reservoirs, treatment plants, then distribution, and give the each household a tap inside their household. And this is we prefer this. Otherwise the pumping is there and all these technology are finalized, and finally the DPS come to the district level. DDWSM, district magistrate, the chairman, he sends his by his approval, he sends DPS to the state level. At district level, then after collecting all the DPRs from their district, the one district water plan is prepared, and there's district, all the district plans of the state sent to the state level SWSM. Then they prepare the state water centers plan, and that finally there's some cost comes. The plan says maybe the 5,000 villages of this cost is approved. So in the state level, there is a committee SLSC chaired by the chief secretary, and one technical committee also. They both the committees finalize the DPRs and their costs. Then finally the output of that comes to the national level, and they present it as a annual action plan before we people in national level. Then finally we approve to the state that your plan has been approved with this, and all through forth. Finally, the village get their DPR approved, and that Jalnigam people should start. Then they start tendering of the document DPR, and they later the program construction start. During the planning, all the villagers are involved. Then during the implementation, basically contractor do that, and villager can monitor the quality of the construction, and for this they are trained for this. And then the villagers during the after completion of the projects, the villagers take over the project, and operation maintenance is done by there. There are two types of the scheme. One is the in-village water supply scheme, where in-village water supply scheme is where the all the water source is also inside the village, so it's very easy to manage. One in-village water supply system consists of the water source, rising main, over a tank, then rising main, then treatment, then over a tank, then distribution line. And there is an IoT system, Internet of Things. We are just developing in the process. I've given the one website, eJal Shakti. If you go there, you will find there is 7-8 pilots. These in this pilot, we have through help of the Tata Trust, we did this, and you can see how much of the water supply is supplied today. As per our project, there is a supply of the 55 LPCD is the minimum water supply with the adequate water quality. So you can see Okay, the water. Ha. I'm Hello. sorry.
Shall we also run the presentation, water smart management? Sure. That will be. I'm just telling about the JJM. It's not Overall. smart water management. And now I'm going. Just I will complete the JJM, how JJM works. Okay. Sure. The ISAs finally the village take over and get the each household get the water supply, adequate water supply, and they pay, they contribute. It's very interesting. In one of the our web meeting, our mission director has been asked by the one of the engineer, sir, विलेज के लोग यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो पानी खर्च करने का. तो my AS asked me to reply this. तो I just told, मैंने कहा सर आप ये विलेज वाटर कम्युनिटी बेस सिस्टम है और बॉटम अप अप्रोच का प्रोजेक्ट है, और आप यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हो टर्म कि विलेजर्स जो है यूजर चार्जेस नहीं दे रहे हैं, this even this user charges नहीं दे रहे हैं, line doesn't give the solution. If in our guideline it has been written the villagers should contribute. When we use the word contribute, is that there is a lot of solutions. If you use the user charges, there is no solution. नहीं दे रहे हैं लोग, बार नहीं दे रहे, नहीं देंगे. But if you use the contributor, it's like it comes from the our insight. Oh, I have to give this contribution of the 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees. So this in JJM use of terms, the use of the words is also very important thing. That basically you have to use the word that's coming from the villagers. Means if you are in the village and how you behave like this, so like this. So it's a detailed discussion. I will not discuss all this right time. It's not time. Then people give their contribution, and through that water supply system works. And as per design, these water supply system designed for the 30 years. Basically, the 30 years it will work. But here is a lot of other challenges like sustainability of water source, recharging of water source, and village of functioning of the village water sanitation committee. Okay. And here we say the one water connection means functional household tap connection. FSTC, functional household tap connection. Functional means that tap connections should have water also for the all 24/7 and 365 days. They get the water. This is the objective. Now, I will also like to run this smart water management. You just run that water supply smart management. So this is basically for the how we now it's for the how the manage smartly the water supply system. So here, uh, I was telling that we use a IoT based system, Internet of Things. All the water tanks are connected with the one gadgets, sensors, and all these. So they give the data through their mobile system, and we collect this data at national level, state level. Then that you can see the live data. If you go that go the eJal Shakti portal, then you will find that there is 7 pilot projects. Now these pilot projects are going further in large in the each and every villages. You can see the what is the today's water supply for this current moment. How much water supply is going? What is the chlorine level? What is the TDS? Okay. So basically, the smart water supply management is a use of information and communication technology to provide the real-time data. This is the water supply management system, one of the method, and this can be used in the planning, operation and management, and for managing the water supply system. Next slide. Next, there was a benefit. I'm just there's a lot of benefits with this. If you go through this, these are social benefits. What are the social benefits? Access to the clean water. They have the always. They must have the water. आपको मालूम पड़ रहा है national level पे, district level पे, state level पे लोगों को मालूम, ऑफिसर्स देख रहे हैं उसको, तो उस पर ध्यान देते हैं. यहाँ इस गांव में पानी नहीं गया, तो खट से एक SMS जाता है उस कंसर्न इंजीनियर को कि इस गांव में आज पानी नहीं गया, तो वो इंजीनियर इमीडिएटली उसको
रिड्रेसल सिस्टम भी इसमें है केमिकल में, तो वो इंजीनियर इस बात को तुरंतली देखता है और वहां पर BWC को बताता है। तो वहां पर जो वाटर को उस सिस्टम को देखने वाला जो ऑपरेटर है वो इमीडिएटली उस इशू को रिजॉल्व करता है। इसका ये फायदा है, सोशल फायदा है, हेल्थ में फायदा है, अच्छा पानी मिलेगा, उसमें क्लोरीन सबका वो डेटा आ रहा है तो उससे अच्छा पानी मिलेगा। हम क्लोरीन की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लोरीन खत्म हो गया है तो उसको भी हम वहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव लाइवलीहुड। अच्छा, दूसरा इम्प्रूव लाइवलीहुड है क्योंकि वहाँ पर एक आदमी का जॉब क्रिएट हो रहा है तो उससे भी उस गांव में लाइवलीहुड क्रिएशन होता है। तो इस तरह से इफ यू सी दीज सोशल बेनिफिट्स, देयर आर लॉट ऑफ सोशल बेनिफिट्स। एंड नेक्स्ट पेज पे देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड, ग्रेटर सिक्योरिटी है। वाटर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी हम पूरी वाटर सप्लाई सिस्टम बना देते हैं और बिकॉज इंजीनियर बहुत दूर रहता है, चीफ इंजीनियर बहुत दूर रहता है, सेक्रेटरीज बहुत दूर रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, तो वी डोंट हैव आइडिया ऑफ द डेली उस विलेज में पानी का सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उससे ये नहीं चल रहा है तो उसको रेस्पॉन्ड करने में महीनों लग जाते हैं। ठीक है, और वो सारे इश्यूज आते हैं। यदि हमने ये आईटी सिस्टम बनाए, इसके हमको इमीडिएटली मालूम पड़ता है तो उस गांव वालों के लिए वाटर सिक्योरिटी भी है इस बात से, उसको उनको पानी मिलेगा। ठीक है, 1-2 दिन का कुछ ब्रेकआउट होगा, उसके बाद दे विल गेट द वाटर। ये ट्रस्ट भी क्रिएट होता है सेफ्टी के लिए, वाटर क्वालिटी की सेफ्टी के लिए, उसके लिए गांव वालों। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि शहरों में ये देखें या आप देखें कि आपको यदि किसी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिलता है, मीन्स वो आप जाते हैं, वो आपको एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, फिर उसके बाद वो पूछने आता है बहुत रेस्पेक्टफुली, मीन्स ही इज प्रोवाइडिंग द गुड सर्विस, तो जाते वक्त तो उसको आप अच्छा टिप देते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। यदि इम्प्रूव सप्लाई सिस्टम होगा, अच्छा सप्लाई सिस्टम होगा, तो गांव वाले जो कंट्रीब्यूशन है बहुत आसानी से देंगे, बहुत इजीली देंगे। तो पैसा होगा तो पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम चलाने में आसानी होगी और लॉन्ग टर्म के लिए वो वाटर सप्लाई सिस्टम लोगों के पास चलता रहेगा। तो इट्स लाइक दिस। तो सर्विस लेवल बढ़ाना है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट अच्छा सर्विस नहीं देता तो आप उसको खाना भी उठ के चल देते हैं या उसको टिप तो बिल्कुल नहीं देते। जेंडर इक्वलिटी, हम यहाँ पर बार बार वुमेन्स को लीड करने की बात कर रहे हैं, तो वो पुरुषों को भी ये समझ में आने लगता है कि इस महिला ग्रुप ने बहुत अच्छा सा ये वाटर सप्लाई सिस्टम चलाया है, तो इनके पास पावर तो है। अदरवाइज समझते तो सब हैं लेकिन मुंह से जो है कोई कबूलता नहीं है। समस्या ये है, क्यों मैडम? हेलो हेलो यस सर। हेलो, Yes, sir, we सुन can रहे हैं hear ना? you. Yes, हाँ, sir. ये तो सब उसमें सब हाँ, तो उसमें वो लोग जो लोग हैं वो भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ अच्छा सिस्टम चल रहा है, तो जेंडर इक्वलिटी, उनकी रेस्पेक्ट बढ़ती है, वो बढ़ता है। और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी को पानी मिल रहा है तो मोस्टली झगड़े गांव में जो है पानी की वजह से बहुत झगड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि म्यूनसिपैलिटी में जब वो वाटर टैंक आता है तो तमाम मारधाड़ होती है, तो वो भी वैसे गांव में भी होता है। पानी का एक छोटा सा नल है, एक टैप है, उसमें से बहुत सारे लोग पानी भर रहे हैं तो झगड़ा होता है, तो वो सबके घर के अंदर पानी है तो वो झगड़े भी कम होंगे, तो लोगों में टेंशन लेवल कम होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं बहुत सारे कि यदि उस एक परिवार को समय पे साफ पानी मिल रहा है तो वो जो बच्ची है या जो छोटा बच्चा है उसको पानी लेने के लिए अपनी माँ के साथ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। तो वो जो जाने का ट्रेवल टाइम है और जो एक ट्रॉमा इस बात का है कि बरसात हो रही है, पानी कैसे लाऊं, बादल गरज रहे हैं, बारिश के फ्लड आया, पानी कैसे लाएं, वो ट्रॉमा खत्म होता है। और वो बच्चे अपनी क्लास के लिए, माँ तो हमेशा चाहती है कि उसके माँ बाप दोनों चाहते हैं कि उसके बच्चे बहुत पढ़े लिख के बने, बहुत अच्छा पढ़े, तो वहां पर उनको फिर वो सेविंग टाइम पे जो है उनको पढ़ने का मौका मिलता है। उस माँ को भी टाइम मिलता है, जो 1 घंटे वो पानी लेने की जाती थी तो वो आके वापस आके अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, वो कभी अपने बच्चों अपने हस्बैंड के अलावा बियॉन्ड नहीं सोचती है। तो वहां पर वो कम से कम 1 घंटा उसको मिला है स्पेयर में, 2 घंटा, तो उस पर कुछ अपने बारे में सोची। ये हम लोग प्रमोट करते हैं भी आपने अब अभी मत सोचो, कुछ अपने बारे में सोचो कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपने पानी पिया नहीं पिया, या आपने कुछ रेडियो सुना नहीं सुना। गाँव में रेडियो टीवी सब देख, एक सीरियल देख लो तो थोड़ा सा उसको जो एंग्जाइटी मन में होती है वो खत्म होती है। एक अच्छा वो सी ऑल्सो फील्स गुड।
यदि मतलब वी फील कि यदि उस घर की महिला सुखी होगी तो पूरा परिवार सुखी होगा, उसके बच्चे अच्छे होंगे, वो अच्छे पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस सब बनेंगे, तो दे विल हैव, घर की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट उसके हैं। महिला जो लड़की है वो अच्छा पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, वो बनेगी, तो घर की इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगा। तो दे आर द all lot of I have narrated lot of benefits, economic benefits. You can read this. मेरे पास ये बहुत छोटा सा है इसलिए मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं कर पा रहा। रिड्यूस वेस्ट, वाटर का वेस्ट नहीं होगा तो वाटर हम पीने के लिए ज्यादा मिलेगा। और जॉब एंड अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ थ्रू द जॉब क्रिएशन, इससे जॉब क्रिएशंस बहुत होंगे। प्लम्बर्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो जो आईटी बेस्ड सिस्टम उसको देखने वाला आदमी होगा तो ये भी जॉब क्रिएशन होगा। और ये हम एक गांव में एक जॉब की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखो 6 लाख गांव में 6 लाख जॉब क्रिएशन होंगे, तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना की जरूरत है। इम्प्रूव कैपेसिटी, अब उस गांव ने एक बार एक लीडरशिप करके गांव में वाटर सप्लाई सिस्टम बना दी तो उस गांव की कैपेसिटी बढ़ गई। उनके पास पानी है तो जो ग्रे वाटर आ रहा है उसके वेस्ट से लगभग 65% वाटर जो है वेस्ट जाता है ग्रे वाटर के, तो वो तो उससे थोड़ा बहुत ट्रीट करके सिंचाई कर सकते हैं। तो ये सब लिंक्ड बेनिफिट्स हैं। रिडक्शन इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, अच्छा अच्छी स्कीम, गांव के लोग जिनको वो स्कीम चाहिए जो उसको एक्चुअली यूज करेंगे। मैं तो जैसे यहाँ पर ले में आया हूँ, अब मैं इनके पानी को तो नहीं यूज करूंगा। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, तो मैं नोएडा में जो पानी है उसी को यूज करूंगा। तो मेरे लिए यहाँ पे हो सकता है उतनी ज्यादा ओनरशिप नहीं हो, लेकिन यहाँ के लोग हैं जो गांव के लोग हैं उनकी ओनरशिप ज्यादा होगी। तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा तो लंबे समय तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर 30 साल तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर पाएगा और बार बार जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट फंड्स ओनली कम्स फ्रॉम और ये हम ही लोगों से जाता है पैसा जो इनकम टैक्स जीएसटी के तौर पे हम देते हैं, उसी का ही होता है। तो बार क्रिएशन, तो नया गांव के लिए नई तरह के उसमें हम फंड लगा सकेंगे और वो दैट लीड्स द कंट्री गुड। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड बहुत है इसमें, बहुत सारे मनरेगा का फंड भी इसमें आता है, 15 फाइनेंस कमीशन का फंड भी आता है। मनरेगा के फंड पे यदि गांव में एक वाटर टैंक है जो बहुत ही कचरा हो गया है, उसमें पानी सैंड भर गई, उसको यदि हम एम्प्टी करते हैं तो और फिर बरसात का पानी इसमें भरते हैं तो वाटर रिचार्ज करता है। अच्छा, उस पूरी प्रोसेस को करने में मनरेगा के अंडर में उस गांव के लोगों को ही एज ए लेबर करते हैं वो लोग, उनको तो पैसा मिलता है उसका, तो वहां पर की इकोनॉमी उसमें ग्रोथ होती है। नेक्स्ट लाइक, तो इम्प्रूव वाटर क्वालिटी थ्रू रिड्यूस पॉल्यूशन कम है, कंटामिनेशन कम है, क्योंकि हम ट्रीटेड वाटर बना रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनते हैं, तो इसका भी वाटर क्वालिटी में इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव इकोसिस्टम एंड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन, हेल्थ में फायदा होगा, हेल्थ अच्छी होगी, उसका होगा इकोसिस्टम अच्छा होगा। बार हम जो है पहाड़ों को या रोड को काटेंगे नहीं उसको, तो उससे इकोनॉमी सिस्टम ठीक होता है। पेड़ है उसको पानी मिल गया जो ग्रे वाटर है, तो उससे, तो ये इस तरह के बहुत सारे लिंक्ड हैं। यू आर द यंग एंड आप उसको और अच्छे तरह से लिंक कर सकते हो। एनवायरमेंटल बेनिफिट है उसके, ठीक है। रिड्यूस ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, मान लिया पानी ग्राउंड वाटर बहुत खत्म हो रहा है, वी इसीलिए जल जीवन मिशन में मोस्टली कहते हैं कि आप सरफेस वाटर को यूज करिए, ठीक है। लेकिन वो कंटामिनेशन है तो उसको ट्रीट करिए, डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट प्लांट इसमें लगाए जाते हैं। तो ग्राउंड वाटर धीमे धीमे रिड्यूस हो रहा है, तो यदि हम इसी तरह से अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी हमको पेट्रोल पंप पे मिलेगा और पानी की गोलियां हो सकता है बना दें H2O मिला के कुछ, कि पानी पीने की जगह आप गोली खाने लगेंगे। तो इसलिए हमको ध्यान देने की बात है कि हम पानी को 3 R बोलते हैं, यू हैव हर्ड, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। जितना कम पानी आप यूज करते हैं, यदि नहाते वक्त आप शावर यूज करते हैं तो बेटर है कि आप बाल्टी का पानी यूज करें, या फ्लशिंग के लिए आप पहले 12 लीटर के फ्लश आते थे, 12 लीटर पानी एक फ्लश में चला जाता था। यदि अब नए एडवांस फ्लश आ गए हैं, हाफ फ्लश होता है, फुल फ्लश होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस फ्लश के अंदर एक पानी से भरा हुआ बॉटल डाल दें तो उतना पानी कम फ्लश पे होगा,
तो ये बहुत सारी मेथड्स हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, पानी को रीयूज कर सकते हैं। हम ग्रे वाटर निकल रहा है उसको ट्रीट करके हम इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट CO2 लेवल कम होता है, ये आप जानते होंगे। रिड्यूस वाटर कंजम्पशन ये होता है आपका, आप कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप कम पानी को यूज कर सकते हैं। और गवर्नेंस बेनिफिट है, नेक्स्ट देखेंगे गवर्नेंस बेनिफिट। तो इसका ये IoT सिस्टम लगाने से क्या है, एक तो मैनेजमेंट सिस्टम बढ़िया हो जाता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल रही है। एक बार वन टाइम कैपिटल कॉस्ट खर्च होगी और उसको प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हैं। आजकल बहुत शानदार बहुत अच्छी क्वालिटी के सेंसर्स आ गए हैं, ये आ गए हैं, AMR मीटर्स आ गए हैं। तो बार बार जो है, एक मान लिया गाँव पे जाके किसी कोई मीटर रीडिंग लेनी है तो एक आदमी गाड़ी से जाएगा फिर वो रीडिंग लेगा, तो दैट कॉस्ट से बेटर है कि एक बार हम ये खर्चा कर दें तो हमारा बहुत सालों का जो है खर्चा बढ़ेगा। लेकिन सस्टेनेबिलिटी इज अगेन इशू, इतने दिन तक हम उसको कैसे सस्टेनेबल करेंगे, कैसे रखेंगे सस्टेनेबल, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ डेटा, उससे एक्यूरेसी ऑफ डेटा होगा कि आज उस गांव को हमने 55 लीटर पानी देना था, अब बहस चल रही है कि वो एक कह रहा कि हमने, इंजीनियर कहेगा मैंने तो 55 दिया था, गांव के लोग कह रहे हैं कि हमने 10 ही दिया था, हमको 10 ही मिला या 20 मिला। तो वहां पर झगड़ा होने की जगह आप ऑनलाइन सब आ रहा है आपका इससे, तो थ्रू इंटरनेट सिस्टम, तो उसकी एक्यूरेसी है, तो सही एक्यूरेसी मालूम पड़ सकती है कितना पानी दिया, कितना क्लोरीन है। यदि आपको पूरे कंट्री में क्लोरीन का लेवल मालूम पड़ रहा है तो क्लोरीन की डिमांड का आप आइडिया लगा सकते हैं, क्लोरीन कंपनीज उसका आइडिया लगा सकती हैं, उतना मटेरियल बना सकती हैं। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। इंक्रीज कम्युनिटी लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटी, हम कम्युनिटी को बार बार, इसके लिए आज की डेट पे कम्युनिटी को ये नहीं मालूम है कि IoT क्या होता है। अब जब ये सिस्टम लग जाएंगे हमारे तो लोगों को मालूम पड़ने लगेगा, अच्छा ये तो मोबाइल और IoT सब एक सा ही है, हमको ये भी मालूम पड़ेगा। वहाँ के बच्चे ये IoT सिस्टम जानेंगे तो वो आगे मतलब उनको जो नॉलेज 5 साल बाद मिलती, वो नॉलेज उनको आज ही मिल गई, तो उससे उनकी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ये बेसिकली गवर्नेंस बेनिफिट है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, आपको मैडम शेयर करेंगे। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट एंड डेवलप एंड इनोवेट द टूल्स फॉर व्हेन वाटर मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप के टूल्स अभी बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी बन रही है, उनको यूज करने का मौका इसमें मिलता है, बार बार टेस्ट करने का मौका मिलता है, और आपको एक टेक्नोलॉजी फेल होती है तो दूसरी टेक्नोलॉजी बनाने का मौका मिलता है, और इसके जो गैप्स हैं, टेक्नोलॉजी में गैप्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है, तो आप नए बेटर सिस्टम को बना सकते हैं, ये भी इसका एक बेनिफिट है। पोटेंशियल SWM टूल्स आप तैयार कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब फैक्टर ऑफ सक्सेस, इसके एक हमने असेसमेंट किया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रोजेक्ट या वो सिस्टम ज्यादा दिन तक चलेगा तभी फायदा होगा, अदरवाइज वो बार बार टूट जाएगा, ब्रेकेज हो जाएगा, तो बार बार पैसा लगेगा, तो इकोनॉमिक लॉस होगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, लोगों के बीच में रिजेंटमेंट होगा, सर्विस लेवल पे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। बहुत सारे क्रॉस कटिंग फैक्टर हैं, जैसे पॉलिटिकल कमिटमेंट, ये जल जीवन मिशन में आज यहीं पे जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं, इसमें इंजीनियर्स तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें BDC मेंबर्स, BDC में ब्लॉक डेवलपमेंट मेंबर्स, जो ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उनके काउंसलर्स होते हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर हैं, तो उनका कमिटमेंट, तो हम आज यही कर रहे हैं यहाँ पर, इनको बोल रहे हैं कि भी आप अपना पॉलिटिकल कमिटमेंट दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको करें, 73rd अमेंडमेंट के अंतर्गत ये आपकी जिम्मेदारी, ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इनके मन में, ये भी कह रहे हैं हम कर सकते हैं, हमको बताओ तो सही। तो ये इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। सपोर्ट फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट पॉलिसी, ये इसकी वजह से नेशनल लेवल से भी अलग अलग पॉलिसी हैं, वो फेवरेबल पॉलिसी बनाई जाती हैं, उसके ये मिलना चाहिए, मतलब वो जो आज जैसे यहाँ पर हमारे डायरेक्टर हैं ASB जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर जानकारी ले पा रहे हैं क्या क्या इश्यूज है, तो अब हम वापस जाके जब पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे तो उसमें हमको ये मदद मिलेगा कि ये इश्यूज हैं, इनको सॉल्व करने का कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा।
कंबाइनिंग द टूल्स, एंगेजमेंट, गवर्नेंस, ये सब इसमें होगा। ये भी एक इशू है, उसको मतलब टूल्स बहुत ही इंटीरियर में है, सेंसर, हाउ टू कनेक्ट विद दिस, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट का इशू है, ये सारे इश्यूज को वो करना। हम ये भी इसमें प्लान सोच रहे हैं कि जब 5G आएगा तो हो सकता है ये और भी आसान हो जाएगा। तो ये भी इश्यूज आते हैं, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, कैसे उसको हम ट्रांसफर करेंगे, वो सेंसर खराब हो गया तो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। और इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की भी जरूरत है। उन स्टेक होल्डर्स जो गांव के लोग हैं, जो BDC मेंबर्स हैं, इलेक्टेड लोग हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट की बहुत जरूरत है। ये तभी सक्सेसफुल होगा। एक ही अप्रोच से हम इस इशू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमको बहुत सारे मल्टीपल तरह के अप्रोचेस अपनानी पड़ेंगी, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अब इसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट स्लाइड। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, तो इस पे भी हमने काफी इलेबोरेट किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंड है नहीं है इतना। हमने कह तो दिया कि 6 लाख विलेजेस में सेंसर्स लगेंगे, ये लगेंगे, लेकिन इतना फंड क्या अवेलेबल है, ये भी, क्योंकि इसमें फंड गांव को भी देना है, स्टेट को भी देना है, सेंटर को भी देना है, इसका भी एक इशू आता है। ये भी एक मतलब फैक्टर है सक्सेस का, ये प्रॉपर फंड मिलता रहे, ठीक है। अच्छा, केवल पानी को ही फंड नहीं करना, गवर्नमेंट को तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करना। इंटरनल फाइनेंसिंग, स्टेट लेवल की फाइनेंसिंग, स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से सोचती है, उसके अपने एजेंडा है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने एजेंडा होते हैं, तो वो क्या फंड उनको देंगे इतना जो उनका अपना शेयर पूरा देंगे, तो ये भी इश्यूज इसमें रखे आते। तो इसमें 2-3 तरह के और हमने वो लिखे हैं, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। नेक्स्ट इशू, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड करें। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे रेगुलेशन है। अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, क्या वो एनवायरमेंटली इसको वो करेंगी? अभी हम इसके लिए वो चल रहा है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करने में कोई इशू तो नहीं आएगा नेशनल लेवल पे है। नेशनल प्लान के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमको। बहुत सारे जब हम पास ही होगा तो जो इंटरनेट सिस्टम है उसको रोबस्ट बनाने के लिए हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि आप इंटरनेट सिस्टम को बढ़िया बनाइए। अब जैसे यहाँ ले में आते हैं तो यहाँ पर प्रीपेड फोन चलते नहीं, हमारे सारे फोन बंद हो गए हैं। ये तो मैंने एक किससे कनेक्शन एक लेके, यहाँ का लोकल से लेके मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, तो ये भी इश्यूज आते हैं। तो अब यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है तो कैसे हम इस सिस्टम को चलाएंगे, ये इश्यूज उसमें आएगा, ठीक है। और कमिटमेंट फ्रॉम द लीडर्स के से का कमिटमेंट जो है, और दूसरा लीडर गवर्नमेंट लीडर्स, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और जो इलेक्टेड हैं, उनका कमिटमेंट भी इस फैक्टर को इफेक्ट करता है। टेक्निकल फैक्टर हैं, टेक्निकल फैक्टर तो अब वो सेंसर कैसा है, हाउ इज दैट सेंसर, किस मतलब इतना सेंसिटिव है नहीं है, या इतने दूर तक वो मैसेज भेज सकता है नहीं भेज सकता है, वहाँ कनेक्ट, ये बहुत सारे टेक्नोलॉजी के भी इश्यूज इसमें आएंगे। और विलिंगनेस टू पे इज द फाइनल, यू कैन से कि उस प्रोग्राम को चलाने के लिए गांव वालों का विलिंगनेस टू पे है या नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और तभी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होगी और तभी ये प्रोजेक्ट ज़्यादा समय तक चल पाएगा। इन सब के अलावा इन सब में देखिए जो भी लोग हैं वो ये स्लाइड खत्म हो गई, थैंक यू। थोड़ा सा और मैं इसको वो करता हूँ कि इन सब कम को करने के लिए रिमोट एरिया में इंजीनियर्स हैं या जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनके पास नॉलेज नहीं होती, किसी के पास है किसी, तो उसके लिए भी हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। कैपेसिटी बिल्ड ट्रेडिंग का एक हमारा सिस्टम है। अभी हमने रिसेंटली 104 की रिसोर्स सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया। दीज की रिसोर्स सेंटर्स आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑल ओवर इंडिया में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्प्रेड हैं, जो अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डिवीजन होगा उसके हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे। वो ट्रेनिंग बहुत तरह की होंगी, जैसे IoT बेस्ड उसकी ट्रेनिंग होगी, या टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग होगी, पार्टिसिपेटरी अप्रोच को कैसे फॉलो करें उसकी ट्रेनिंग होगी। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। राइट नाउ हम दिल्ली में इस पे उनके एनुअल एक्शन प्लान्स को हम अप्रूव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका उनको फंड देंगे और फिर वो गांव-गांव में जाके ISA और इंजीनियर्स उन सबको ट्रेनिंग करेंगे, गांव के लोगों को भी
ट्रेनिंग करेंगे। ये भी एक हमारा पैरेलल वो है जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट। तो पूरे देखिए जल जीवन मिशन के प्रोग्राम को चलाने में फंड्स की जरूरत है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है और ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम की भी जरूरत है। वी आर आल्सो ट्राइंग टू डेवलप अ ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम जिसमें कोई भी ग्रीवेंस गांव के लोग पे वो करेंगे तो सीधे वो थ्रू एसएमएस जो है उस गांव के इंचार्ज को चली जाएगी और ऊपर लेवल पे भी जाएगी, इससे वो भी उसको मॉनिटर कर सके। तो ये इस तरह का भी एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा एक ऐप बना रहे हैं, ये मोबाइल ऐप जिसमें गांव पे ही वो आदमी अपने गांव की स्थिति को देख सकता है, समझ सकता है आज कितना पानी मिला, जो ई जल शक्ति में है वो भी उसको सीधे वो गांव के लोग उसको दे सकते हैं। तो जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ही ज्यादा गवर्नेंस बढ़िया होगा और उतनी ही ज्यादा वाटर सिक्योरिटी ज्यादा होगी। अब इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, ये बहुत कोई इतना आसान काम नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो उन चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए हम लोग स्टेट में जाके वहाँ जाके ऐसे वर्कशॉप करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। जब उन्होंने प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया था तब हमारे पास केवल पूरे इंडिया में 3 या 4 करोड़ टैप कनेक्शंस दिए गए थे और आज ये 2 साल होने वाले हैं 15 अगस्त को, तो आज हम लोग करीब 40 करोड़ से ज्यादा के टैप कनेक्शन हम लोग दे चुके हैं और 1 लाख विलेजेस को पानी मिल गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है 2024 तक हम करीब 18,000 से थोड़ा ज्यादा टैप कनेक्शन लोगों को दें और 6 लाख से थोड़ा ज्यादा जो विलेजेस हैं उन सबको पानी दें। तो ये एम है। तो हम स्टेट से बात करते हैं, स्टेट से मीटिंग करते हैं, उनके एक एक छोटे छोटे जो हमारी टीम्स हैं, पीएमयूज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईवाई एंड केपीएमजी, ये सब हैं, ये उनके डेटा को रिव्यू करते हैं। फिर स्टेट के इंजीनियर्स उन सबको बता देखिए यहाँ पर आप जल्दी कर सकते हो, इसको इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये डे टू ये सपोर्ट जो है, हैंड्स ऑन सपोर्ट इसको बोलेंगे, तो ये हम लोग उनको देते रहते हैं। उस प्रोजेक्ट को पूरा चलाने में वी ट्राई टू हेल्प देम। तो ये पूरा मोस्टली था पॉइंट सारे। इसके अलावा मैडम कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएंगे तो आई विल टेल। Yeah, I think it's very amazing the amount of work is happening and in a collaborative format. I think with, as you said, ENY and KPG, KPMG has PMU and then a lot of organizations coming together. So that's a very, very good thing. I'll hand over to Harshita for facilitate the question answer process. Okay. Thank you, sir. It was a wonderful session with you. Now we'll take some questionnaire session. Sure. Fellows, you can come up with your questions. Raise your hand. Devendra, Harshita is the leader of the day for your session. Great. Harshita, thank you for helping me. Harshita is great. It's great. Yes, Badal Chaudhary, you can go ahead. हाँ बादल, yes, I can see you. खुर्जा, अरे खुर्जा से हो आप, great here. Sir. हाँ, बताओ. Sir, I want to ask a question regarding like the villages that are being included in Jal Jeevan Mission are chosen by ministry और मतलब उनको चूज कौन करता है कि इस गांव में कनेक्शन किया जाएगा? नहीं, इसमें देखो ये इट्स नॉट ए डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट नहीं है, ये डिमांड के साथ, ये हर घर जल, इवन जो आपका खुर्जा में गांव है उसमें भी गांव में पानी मिलेगा, आपके डैड को भी पानी मिलेगा। इसमें कुछ ये नहीं है कि somebody left and nobody left behind। यदि आप ये जो हमारा पोर्टल है ना, जो जल जीवन मिशन का पोर्टल है, इसमें जाओगे तो आप अपने गांव को देख सकते हो। उसमें उसकी बाउंड्री बनी है, ठीक है, उस गांव में लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उस गांव के आगे आपके डैड के नाम के या डैड या दादाजी जो भी हैं उनके नाम के आगे लिखा होगा कि इनको पानी दिया है या नहीं दिया। ओके, तो एवरीबॉडी विल गेटिंग वाटर, हर घर जल। वो पानी तो मिलेगा लेकिन कुछ प्रायोरिटी होती होगी ना कि पहले इन गांवों तक पानी पहुंचाना है फिर इन तक, लाइक जैसे कि पैरेलल। हाँ, वो तो देखो कहीं पे पहुंचा नहीं, कहीं पे वो नहीं है, वो तो वर्क चलता है ना, एक साथ सब जगह काम नहीं हो सकता है। हाँ, तो वो धीमे धीमे सबको पानी मिलेगा। प्रायोरिटी कुछ नहीं है, प्रायोरिटी सभी प्रायोरिटी है।
तो उसमें हम क्या करते हैं, अब इतना बड़ा 18 करोड़ टैप कनेक्शन देने हैं, तो उसको मैनेज कैसे करें। और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना हुआ है कि यदि पूरे इंडिया में जितनी पाइपलाइन बिछी है उसको यदि निकाल के अर्थ के चारों ओर घुमाया जाए तो कम से कम 1 लाख राउंड उसके लगा सकते हो, इतना पाइपलाइन बिछा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले पिक करते हैं। मींस ऐसे गांव जहाँ पे वाटर सोर्स है, पानी आ रहा है और उनके स्टैंड पोस्ट में बहुत अच्छा पानी आ रहा है, तो हम उनको बोलते हैं कि इस पानी को स्टैंड पोस्ट से आप उस 15 जो लोग पानी वहां पर से लेते हैं उनको एक्सटेंड कर दो। ओके सर। ठीक है, और फिर ये पानी कम है तो सोर्स को ऑगमेंट करो, पावर सप्लाई जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको ऑगमेंट करो। तो फर्स्ट उनको लेते हैं। फिर दूसरा क्या है कि हाँ उसको प्रायोरिटी में लेते हैं जो रेट्रोफिट जिसमें करना है, थोड़ा बहुत रिपेयर से उससे जिसमें काम हो सकता है। ठीक है, थर्ड लेवल पे आता है ऑगमेंटेशन। यहाँ पे सोर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठीक है, थोड़ा बहुत रिपेयर करना है और सोर्स में पानी कम है तो उसको ऑगमेंट करते हैं, कहीं दूसरे साइड से पानी लाके उसमें डाल के उसको ऑगमेंट करते हैं। फिर लास्ट में आता है काम उसका जो न्यू स्कीम्स बननी है। ओके सर। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, कहीं पर ऑगमेंटेशन चल रहा है, कहीं पर लो हैंगिंग फ्रूट्स चल रहा है, कहीं पर न्यू स्कीम चल रही है। ये सब काम पैरेलल चलते रहते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम चलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, दस अपने गांव में जाके जरूर देखना क्या हुआ। सर मेरे डैड को नहीं है, मेरे गांव में नहीं है सर, टैप कनेक्शन नहीं है अभी तक। हाँ तो आएगा, आपके पास आएगा। आप अपने ग्राम प्रधान को बोलो, वो कुछ कर रहा होगा वहां पे, आप फोन करो उसको अभी। मतलब सर उसको ये नहीं पता कि उसको बोलना कहाँ है। नहीं बोलना उसको बोलना है डिस्ट्रिक्ट में स्टेट को। ओके, ठीक है, और उसको बोलना है जो उनका जल निगम, यूपी में तो जल निगम काम करता है, जल निगम के जूनियर ईयर असिस्टेंट ईयर होते हैं, उनको जाके बोलना है भाई हम वाटर सप्लाई स्कीम हमारे यहाँ शुरू करवाइए, हम बीडब्ल्यूसी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, सब कहना। एक ये हमारे पोर्टल में बहुत सारी एक जल ग्राम ये वो है, देखो एक डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, इनको जरा सी पढ़ के उनको बताओ और ये उनको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है सर। इट टेक्स टाइम लेकिन सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, आई विल लुक इनटू इट। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। Sandeep Kumar Singh, you may ask. Hello, sir. Good afternoon, हाँ, sir. hello. Thank you, sir, for the presentation. Yeah, Sir, my question is that after connecting the villages, then how will you ensure the quality of water? हाँ, क्वालिटी। आप कहाँ से हो, वेर यू बिलोंग? Sir, from Agra, Uttar Pradesh. आंध्र प्रदेश से। तो Agra, Uttar Pradesh, sir, UP. अच्छा, आगरा। अच्छा, तो क्या होता है कि वाटर क्वालिटी का हमारे उसमें प्रोविजन है कि हर साल में 2 बार वाटर क्वालिटी का टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो अभी आपने सुना, आज से करीब जब कोविड शुरू हुआ था पूरे इंडिया में करीब 25-26 लैब ऐसी थी जो एक्रीडेटेड थी। ठीक है, अभी जो है पिछले 1 साल में हमारे एडिशनल सेक्रेटरी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने करीब 1000 से ज्यादा लैब को NABL एक्रेडिटेड कर दिया है। ठीक है, तो जल निगम जो है उसके पास अपनी लैब्स होती हैं, वाटर लैब्स होती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो साल में 2 बार तो मानसून से पहले, मानसून के बाद उस वाटर सोर्स को की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी चेक करें। एक तो ये हो गया। दूसरा FT के फील्ड टेस्ट किट ये है कि एक छोटी सी किट होती है करीब 1500 से 2000 की, और 6000 की भी एक आती है जो थोड़ा सा ज्यादा है। तो उसमें जैसे 1000 टेस्ट कर सकते हैं। तो वो टेस्ट करने का तरीका गांव की 5 महिलाओं को सिखाया जा रहा है। यू विल सरप्राइज, इन झारखंड में करीब 1326 या 50 के लगभग ट्राइबल वुमेन्स हैं जो FTK का टेस्ट करती हैं, और वो इतने कॉन्फिडेंस से करती है, यदि उन्होंने कह दिया टेस्ट करके कि इसमें फ्लोराइड है तो फ्लोराइड होता है, वो घबराती नहीं है इस बात से, और वो 2 मिनट में टेस्ट करके दे देंगी। आप मान लिया, हो सकता है आप सिविल इंजीनियर हो, आपको समझने में लग जाएगा महीना भर। ठीक है, आप कहोगे कि 2 दिन बाद मैं टेस्ट के रिजल्ट दो, वो सामने आपके टेस्ट करके आपके हाथ में रिजल्ट बता देगी। तो ये FTK टेस्ट है। तो ये 2 टेस्ट होते हैं। ये FTK टेस्ट इज बेसिकली फॉर द अवेयरनेस क्रिएशन।
गांव की महिलाएं हैं, उसी गांव की हैं, वो गांव में हर हफ्ते में एक टेस्ट करते रहती हैं, तो लोगों को बताती हैं देखो तुम्हारा पानी भी ठीक चल रहा है, अब इसमें कुछ कंटामिनेशन आ गया है, ई कोलाई आ गया है, या कोई इसमें वो है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जब डीपीआर बनती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उससे पहले वाटर टेस्ट किया जाता है, उसी के बेस पे पूरा ट्रीटमेंट सिस्टम डिजाइन किया जाता है। फ्लोराइड, आर्सेनिक, ये जितने भी इश्यूज है उसमें सॉल्व किया जाता है। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. हाँ, थैंक यू। In नेक्स्ट। fact, let me add, sir, ki Sandeep, you are going to be with WaterAid, na? Yes, sir. Yes, ma'am. So WaterAid also has a very big project on water testing labs, and they water have been testing labs. supporting and Yeah. yeah. तो आप जानकारी ले सकते हैं उनके बारे में। उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। Yes, ma'am. जो ट्वाड बोर्ड है, तमिलनाडु में जो ट्वाड बोर्ड है, वो ये एफटीके किट सप्लाई करता है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, 1,500 रुपए पे वो एफटीके किट वो करता है। ठीक है, हम ये भी प्रमोट कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को कि वो अपनी पॉकेट में, जब आपने देखा हो ना, तो आपके घर में आरओ को टेस्ट करने के लिए वो आता है ना, बदलने के लिए कैंडल, तो आप उससे कहना कि जैसे टीडीएस बताओ इसका, तो घर से जेब से एक पेन निकालता है और वो पानी में डालता है, टीडीएस बोलता है इसका 26 है, 27 है। तो वैसे ही क्लोरीन के क्लोरोस्कोप, ये इसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट अब आने लगे हैं, 150-200 रुपए के भी मिलते हैं। अमेज़न पे आप ट्राई करोगे तो हो सकता है मिनिमम, आपके पास ज्यादा पैसे हो तो ठीक है, कम है तो 150 रुपए में आप खरीद के जेब में रखो। आप लोग सारे वाटर पे काम कर रहे हो, आई एडवाइस, आपके पास 150-200 रुपए होंगे ही, नहीं होंगे तो अरेंज करके वो खरीद लो अमेज़न से, और इसको हमेशा अपनी पॉकेट में रखो। और जब भी आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, अपने घर में ही हो, बाहर आए, अच्छा कोई पानी पी रहा है, 1 मिनट रुको यार, मैं इसका टीडीएस चेक करता हूँ, आप खट से उसमें डाल के टीडीएस, उसको वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। एक क्लोरोमीटर छोटा सा आता है, पीएच का आता है, ठीक है, आप उसको खट से उसमें डाल के, तो यू विल बी द एम्बेसडर ऑफ क्रिएटिंग द अवेयरनेस। वो 150 मीन्स 300, ज्यादा 500 लगा लो, 500 रुपये खर्च करना लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, यार 500 रुपये तो आप खर्च कर सकते हो, वो खर्च करके जेब में रखो, हर एक का पीएच और नाप के बताते रहो, ये है। तो उनमें अवेयरनेस क्रिएट होगी क्वालिटी के प्रति, और ये अवेयरनेस आप, मेरे ख्याल से इसमें मैडम कितने लोग हैं, 26 लोग, तो 20 लोग हैं अभी। हाँ 20 लोग हैं, तो 20 लोग यदि अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो देखिए कितने लोगों का भला होगा, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। हो सकता है 50वें नंबर में है तो 49 में तो आ ही जाएगा। वेरी ट्रू, आई थिंक वेरी प्रैक्टिकल, आई थिंक प्रैक्टिकल बात है, कोई खास बात नहीं। आप भले बस में बैठे हो, कोई पानी पी रहा है, खट से उसको पकड़ के उसका पीएच बता दो उसको, वो भी है क्या यार, ये वो है साइंटिस्ट आदमी, आपको भी अप्रिशिएट करेगा। नेक्स्ट। Ujjwal, you may go ahead. Yeah, okay, thanks. Am I audible? Yes, sure. Yeah, good afternoon, sir. So thanks for your insightful lecture. So I just wanted to know that you are presently located in Leh, and we have heard about the famous ice stupas that are being used for restoration and all. Yeah. So, are you also incorporating them for the drinking water purpose? Yeah. Actually, क्या है कि we have the also responsibility of water security. Water security doesn't mean कि आपके घर के अंदर पानी रेगुलर आ रहा है, ये सोर्स पे पानी ही नहीं होगा तो कहाँ से आएगा। तो हमारे उसमें प्रोविजन है कि वाटर सोर्स को ऑगमेंट करना है, वाटर सोर्स को रिचार्ज करना है, वो किसी भी तरीके से, किसी भी टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं। तो उसमें 15 फाइनेंस कमीशन, मनरेगा, ये एक्स्ट्रा फंड दिए गए हैं जिससे आप वाटर सोर्स को रिचार्ज कर सकते हैं। इफ यू आर जैसे वाटर सोर्स को रिचार्ज करने के लिए स्प्रिंग्स को ट्रेंचेज बनाते हैं, हिल्स में ट्रेंचेज बनाते हैं और एक्यूफर रिचार्ज करते हैं। तो उसी तरह से ये इस रीजन में जो लेह लद्दाख एक्सट्रीम कंडीशंस का रीजन है, यहाँ पे आइस स्पूता बनाते हैं। आइस स्पूता क्या है कि यहाँ पे एक लकड़ी का खंबा लगा देते हैं, ठीक है, लकड़ी का कोई भी खंबा, ये वो पेड़ ऐसा हो जिसमें बहुत सारे टहनियां हो, ये इस तरह का एक कर देते, उसमें एक पैरेलल एक पाइप लगा देते, पानी का पाइप, ठीक है, उसमें ग्रेविटी से उस पानी के पाइप में उसके अंदर पाइप में पानी आता है, ऊपर को स्प्रिंकल करता है ऊपर आगे, जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कोई फवारा टाइप का, बेसिकली ये फवारा बना देते हैं ये आपको। जब वो फवारा बनता है, उसको जब नीचे आता है तो ठंड इतनी होती है कि वो जमने लगता है, तो धीमे 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 लेयर्स बनती जाती, जमती जाती, तो पूरे विंटर वो जम के तैयार हो जाता है।
फिर उसको समर टाइम में 2, 4, 5, 6 महीने उसको वाटर के लिए यूज करते हैं। तो ये आइस स्पूता का कंसेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट। Thank you, sir. Deepesh, you may ask. Yeah, I'm audible to you, sir? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. So thank you, first of all, thank you, sir, for your presentation. Sir, Sure. my basic question is for financial accessibility of JJ. Sir, how is the fund flow from center to state and state to local level, sir? देखो फंड, आप कहाँ से बोल रहे हो? Sir, I'm from Maharashtra. महाराष्ट्र, nearby ग्रेट, Nagpur. बहुत। Yeah. नागपुर, अच्छा अच्छा। Yeah. यहाँ पे नागपुर पे 24/7 वाटर सप्लाई के लिए अमृत प्रोजेक्ट में मैं जब काम करता था, उसमें यहाँ पे ट्राई किया गया था। काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा था, सक्सेस भी रहा था, फेलियर भी रहा था, कंट्रोवर्शियल भी रहा था। तो देखो फंड फ्लो कैसे होता है, हमारे यहाँ पर 3 तरह की स्टेट्स हम लोग कंसिडर करते हैं। एक तो है कि नॉर्मल स्टेट, जैसे लाइक महाराष्ट्र इज अ नॉर्मल स्टेट, यूपी इज अ नॉर्मल स्टेट। दूसरी स्टेट्स होती हैं जो हिल स्टेट होती हैं, ठीक है। तीसरी स्टेट होती हैं जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो जो नॉर्मल स्टेट है उनको 50-50 का फंड होता है, उनको 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 50% स्टेट को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। उस 50% में से इन सब में से 5% जो है, मतलब 5% पब्लिक को करना पड़ता है, तो ये फंड है। तो 95% स्टेट एंड सेंटर मिलके देती है, 5% गांव वालों को करना पड़ता है, ठीक है। अब रहा हिल स्टेट, तो हिल स्टेट में 90-10 के रेशियो में होता है। 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। मींस और जो 5% है वो कम्युनिटी देती है। तो ये इसमें 9-10% में उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। 90-10 के रेशियो में फंड फ्लो होता है। तीसरी आती है ये यूनियन टेरिटरी से लद्दाख है, इसको 100% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती है, ठीक है। ये तो हो गया फंड का रेशियो क्या है। नॉर्थ ईस्ट वालों को भी 90-10 में के रेशियो में मिलता है पैसा। अब फंड फ्लो कैसे होता है, इसमें फंड फ्लो के लिए विलेज जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एनुअल एक्शन प्लान बनाती है। वो एनुअल एक्शन प्लान हमारे यहाँ सबमिट होता है और जब अप्रूव हो जाता है तो उसका 50% फंड देने के लिए, उनको अप्रूवल देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोला जाता है और वो फंड वहां से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जितना फंड रिलीज होगा उतना ही पैसा उनको वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को भी अकाउंट खोल के उसमें डालना होता है। और यहाँ से फंड जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का फंड आता है, वो अल्टीमेटली जो है DWSM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है और वो फिर विलेज में आपके जो जल निगम या PHED डिपार्टमेंट है, इनको वो पैसा दिया जाता है। अच्छा, ये फंड फ्लो ऐसा नहीं होता कि एक बार फंड दे दिया तो दे दिया, ऐसा नहीं होता। ये फंड फ्लो खाली पेपर में अप्रूवल होता है कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा वहां खर्च करके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिम्बर्समेंट ले लेती है, ठीक है। और ये एक कनेक्शन होता है, PFMS करके एक अकाउंट होता है, उसमें सारा मॉनिटर होता है, ये नेशनल लेवल मॉनिटर होता है कि आज कितना रुपया महाराष्ट्र ने रिलीज किया। वो हमको यहाँ 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा कि महाराष्ट्र ने यार रिलीज कर दिया, उसी हिसाब से एक्शन होता है। कहीं पे फंड को ब्लॉक नहीं कर सकता कोई स्टेट गवर्नमेंट, अपने आप फंड लेके रखे रहे और वो नहीं कर सकता, बल्कि उसको वो फंड का फ्लो बना रहे, इसके लिए वो है। अच्छा, एक मदर चाइल्ड अकाउंट सिस्टम भी होता है, जिसमें जो मदर अकाउंट नेशनल लेवल पे होता है, चाइल्ड अकाउंट जो है स्टेट लेवल पे होता है। जिस दिन वो वहां से फंड का रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ नेशनल लेवल पे जो मदर अकाउंट है उसको आदेश दिया जाता है कि इतना पैसा रिलीज कर दे। तो कहीं पे पैसा ब्लॉक नहीं होता। इस गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया है कि कहीं पे किसी के पास पैसा अपने अकाउंट में नहीं रहता, वो हमेशा सर्कुलेशन में रहता है। This is a fund flow. Oh, Yeah, I think okay, it's a sir. very detailed. Yes, sir. Yes, ma'am. It is a detailed one. But sir, who is the authority or who is the head person to do the transaction, sir? Additional In local Director, level? Jal Jeevan Mission. Okay. Okay, sir. I have another question for source. Sir, in the Rajasthan, there is a minimum surface water, and it is a overexploited state for groundwater. So, how you ensure Jal Jeevan Mission sustainability in Rajasthan? वो Just तो like देखो, district like Saroi and Pali.
हाँ, वो पहला तो देखो डियर क्वेश्चन ये है कि हमको इंश्योर नहीं करना है, वो ये इंश्योर करना है स्टेट गवर्नमेंट को। वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वो इंश्योर करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, वो बैठ के गांव वालों से बैठ के वो टीम बात करेगी कि हो सकता है वहां पर कोई डीप ट्यूबवेल खोदने की जरूरत पड़े, तो वहां से वो पानी ले सकते हैं। नियर बाय में कहीं कोई नहर है, इंदिरा नहर है जैसे, वहां से वो पानी ले सकते हैं। ठीक है, नियर वहां पर कोई रिजर्वायर बना है, वहां से पानी ले सकते हैं। डिफरेंट मेथड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वो कर सकते हैं। बट दैट विल डिपेंड्स अपॉन द विलेज। मैं यहाँ से कुछ नहीं कह सकता कि मेरे सामने एक स्ट्रोक विलेज दिख रहा है, बट आई कांट से कि वहां पर क्या सॉल्यूशन होगा। वो गांव में ही जाएंगे, गांव के साथ बैठेंगे तो वो सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि दे आर यूजिंग दैट वाटर फ्रॉम हजारों साल से वो पी रहे हैं पानी। हम तो खाली स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं उसको। वो पानी जो है नदी में बह रहा है, हमने पाइप मतलब जेजेएम के थ्रू पाइप लगा के वो उनके घर तक आ रहा है। तो दे विल डिसाइड दिस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो हो गया ये, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैं हाफ रहा हूँ। we can I think great sir. Harshita, any other question? No, ma'am, I don't think so. अच्छा, ग्रेट। ओके डॉक्टर देवेंद्र, एक छोटा सा मुझे एक प्रश्न पूछना था, देन वी कैन हाँ क्लोज हाँ, इट। बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज आप ये प्रोजेक्ट 2024 तक है जल जीवन मिशन का, और इट्स वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट, हाई एस्पिरेशनल प्लान, and implementation has been such a big challenge all the time. We have seen it in last 50 years. Do you think we have learned our lessons of implementation, and the program has has taken that challenges in mind when planning and हाँ, while ये देखिए पुराने जो जितने भी स्टडीज, इसमें बहुत सारी स्टडीज भी हैं, पुराने जितने भी चैलेंजेस थे उसको इस प्रोग्राम में फैक्टर इन किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस को हम नलीफाई ना कर पाए। सपोज 10 चैलेंज हैं तो उसमें से 5-7 को हम नलीफाई कर पाए और उसको बेटर, तो फिर जब कुछ और चैलेंज बचेंगे तो फिर नई गवर्नमेंट आएगी, नए प्रोजेक्ट्स फिर एक्सटेंड होगा। तो ये अच्छा, दूसरा क्या होता है कि हम बीच बीच में जब रिव्यू करते हैं तो हम अपनी पॉलिसी को चेंज करते रहते हैं, अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करते रहते हैं, उसमें बार बार जो है उसको रिव्यू करते रहते हैं, तो जिससे कि जो इन बिटवीन जो करेक्शन है वो किया जा सके। ठीक है, I think this is good. We will not hold you much further here, and sure. so we will when are you coming back, Dr. Devendra? मैं कल यहाँ पे, कल रात को हम लोग कारगिल चले जाएंगे, फिर 2 दिन वहां रह के आई विल बैक दिल्ली बाय 26। यदि मैं श्रीनगर नहीं गया तो अदरवाइज 28। No problem. I think I'll connect you once you're back on something else. And yeah, Harshita, over to you. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address to Jal Jeevan Mission and Smart Water Solutions. We appreciate your efforts that from such a location you managed to join us and share your experience with us. We are very thankful to you. Thank you so much, sir. थैंक यू। अच्छा, वन टेक होम मैं एक वो कहना चाहता हूँ आपसे सभी इन 20 लोगों से, ये इफ दे कैन डू दैट पेन ड्राइव पेन जो बोला था ना मैंने, TDS पेन, ये लोग बाई कर सके, उसको कर सकें, और मुझे कभी अलका मैडम 2-4 फोटोग्राफ भेजे तो आई विल फील कि इट्स वर्थ वाइल डिस्कसिंग फ्रॉम इस 7,000 मीटर हाइट से मैं इस बात को बोल रहा हूँ। और ये बात हुई, और 2-4 लोगों ने भी 2-4 फोटो भी मुझे अलका मैडम भेजेंगी कि वो TDS चेक करके लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, तो आई विल बी हैप्पी। थैंक यू। और आई एम ऑलवेज ओपन टू डिस्कस, कभी भी आपको कुछ डिस्कस करना हो, आई एम ओपन। Perfectly fine. Thank you, sir, and keep that in mind. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Okay.